Today we will start another topic of chapter enzymes. As we were discussing regarding enzyme, yesterday we discussed about the characteristics of enzyme. You came to know that enzymes are protein in nature mostly. Enzymes are globular in shape. Enzymes are specific in their reaction. Enzymes increase the rate of reaction. Enzymes has the property of bonding to specific substrate and converting that specific substrate into the product, and it has the ability to lower activation energy. And we also discussed that enzymes have role in the metabolic pathways, like those reactions that are in steps or in the series. Some enzymes in our body are specific for those reactions that are in steps and series. The metabolic pathway are conducted by these enzymes. And then we came to know that activators activate our enzyme and inhibitors inhibit the activity of an enzyme, and enzyme cannot work further. This was discussed in the last lecture, and today we are going to start our next topic, that is on the page number 109 and 110. We will discuss these two topics. Number one is what are the uses of enzyme, and the second topic of today's lecture is how different factors affect the rate of enzyme action. Okay, there are many factors, but we will discuss only one factor today here. And first of all, our first question, so open page number 109. The question is, what are the uses of enzyme? Where do you use the enzyme? Enzyme कहाँ पे हमें help करते हैं? क्या किया जा सकता है enzyme के साथ, और enzyme कौन सी industry में use किए जाते हैं? The answer is they are very important. They have lots of numerous uses in the different industries. Some of the industries are mentioned here. Number one, food industry. In food industry, like making bread, making bun, and different bakery items are made with the help of enzymes. For example, the starch in the wheat is broken down by certain enzymes. Wheat के अंदर, गंदम के अंदर जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सर्टेन एंजाइम के साथ, और देन जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें बंद और ब्रेड वगैरह बनाने में आसानी होती है. सो वी कैन से एग्जांपल ऑफ फूड इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ब्रेड मेकिंग. ओके, एंड द डेफिनेशन इज रिटन वेरी क्लियरली. नंबर टू इज brewing industry. Brewing industry mainly concerned with the alcoholic fermentation, or the beverages that describe them as apple malt or lemon malt, or you can say the barley malt. These kind of drinks, जो कि एप्पल माल्ट, जो का पानी आप सुनते हैं बेकरी से मिलता है, तो इनको माल्ट किया जाता है, इसको फर्मेंट किया जाता है. ठीक है. एंड इन यूरोपियन कंट्रीज दोज हु आर इन्फिडेल्स, जो कि मुसलमान नहीं है, वो अल्कोहल भी बनाते हैं इसी ब्रेवरी इंडस्ट्री से एंजाइम को यूज करके. ओके, सो इन द ब्रेवरी इंडस्ट्री एंजाइम आर यूज्ड कि वो स्टार्च और प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती है, एंड देन उसके ऊपर यीस्ट अप्लाई किया जाता है. यीस्ट उस स्टार्च को ब्रेक डाउन क्योंकि एंजाइम ने किया था ग्लूकोज में. स्टार्च वाज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स इनटू glucose, and the glucose is used by yeast to make alcohol or do fermentation. तो वो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल या डिफरेंट जो बेबी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपको बताया एप्पल माल्ट जो हम पीते हैं, या जो का पानी है, या ये जो माल्ट हैं लेमन माल्ट, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ बेबी इंडस्ट्री. और जैसे इन्फिडेल के ममालिक में जो कि मुसलमान नहीं है, वो अल्कोहल भी बनाते हैं इन्हीं एंजाइम के यूज के साथ. नंबर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो हियर वी कैन गिव द एग्जांपल ब्रेवरी इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक fermentation.
alcoholic ferment or alcoholic fermentation. So next is paper industry. In paper industry, you know the paper pulp is made first, and the paper pulp comes from the wood sources. wood का जो बुरादा होता है उसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन ये बहुत सख्त होता है, इसकी विस्कोसिटी ठीक होती है. द विस्कोसिटी इज डिक्रीज बाय सर्टेन एंजाइम फर्स्ट, ताकि उसको पेपर के पल्प की फॉर्म में लेके आया जा सके. एंड व्हेन द विस्कोसिटी ऑफ these products, enzyme break the starch and lower the viscosity and aid in making the paper. So here in paper industry we can say, for example, paper pulp making. Okay. Next we have is biological detergents. Biological detergents, इसमें आवाज़ आएगी, ये रिकॉर्डिंग में ना वो समझ में थोड़ी देर ठहर. नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स. बायोलॉजिकल डिटर्जेंट जैसे आप देखते हैं कि डिफरेंट आप सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो देर आर सम कलर्ड पार्टिकल इन द डिटर्जेंट. दोज आर बेसिकली एंजाइम्स. एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन द डस्ट पार्टिकल और स्टार्च और एनीथिंग दैट इज ऑन आवर क्लॉथ्स. तो डिटर्जेंट के अंदर एंजाइम डाले जाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सफाई कर सकें. इसकी एग्जांपल अगर देखें तो जो हमारे प्रोटीनेशियस चीज़ें लगी होती हैं हमारे डिफरेंट कपड़ों के ऊपर, तो उसके लिए डिटर्जेंट्स के अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाला जाता है ताकि उसकी ब्रेक डाउन करे. इसी तरह जो डिटर्जेंट के अलावा जो बर्तन धोने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं सोप, उसके अंदर भी एंजाइम डाला जाता है. द एंजाइम्स आर आल्सो present in your soap, dish washing bar, etc. So in dish washing bar the enzyme amylase is added. So in detergent protease enzyme, and in dish washing, for example, we can say the amylase and protease. These enzymes are used in detergents. These enzymes are used in dish washing bar. So next important question is, what are the factors? What are the factors that control the rate of chemical reaction? एक chemical reaction को जो factors increase कर देते हैं या decrease कर देते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल अगर आसानी से लें कि आपने कोई भी रिएक्शन लगाया, घर में कोई भी खाना पका रहे हैं, तो आप चूल्हे को तेज़ कर देंगे तो जल्दी से वो खाना पक जाएगा. बॉयल कर रहे हैं तो तेज़ कर देंगे आंच को तो जल्दी से बॉइलिंग हो जाएगी. सिमिलरली एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर भी ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर का, पीएच का और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का, दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. So first factor we have here, there are three factors we will discuss: the temperature, pH and substrate concentration. But first of all, today our lecture will be concerning with the number one factor, and that is temperature. Every enzyme work at optimum temperature very good. Okay, every enzyme work best or optimum at its optimum temperature. Every enzyme has its optimum temperature. हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. ओके, सो व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर? when we go in a chemical reaction and enzyme is present here, when we increase the temperature, enzymes start working fast. Okay, enzyme increase the rate of reaction with the increase in the temperature, like this. If we plot a graph here, on y-axis we put a rate of reaction governed by enzyme. So when from x-axis we put a temperature, here we are increasing temperature from 0 to let's say 10, 20, 30, 40, 50 and 60, etc. So look at here. When we will start a chemical reaction from here, if we increase the temperature, enzyme activity is increasing.
एंजाइम एक्टिविटी और काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. ओके, सो हियर यू कैन सी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग. जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है. कोई भी एंजाइम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है. ठीक है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट आएगी यहां तक. यहां यू कैन से इफ टिल दिस पॉइंट of temperature, here I mentioned it 37, the rate of reaction is maximum here, maximum, and this is basically optimum temperature. Basically this is a human enzyme, और human enzyme जो हमारी बॉडी के अंदर है वो ज़्यादा बेस्ट वर्क करते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर पे. So here the human enzyme, when we increase the temperature, the rate of activity of human enzyme is increasing up to a limit के जब 37 टेम्परेचर है तो सबसे बेस्ट वर्क दे रहा है, मैक्सिमम उसकी आउटपुट आ रही है, रिएक्शन रेट बहुत तेज हो रहा है. लेकिन when we increase further temperature, जैसे गर्मियों में, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे अंदर के एंजाइम जो है अच्छे वर्क कर रहे होते हैं. लेकिन जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो हमारी एक्टिविटी क्यों स्लो डाउन हो जाती है. बेसिकली आवर एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय एंड आवर बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर जब 37 से अबव चला जाता है तो फिर क्या होता है, द एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और एक लिमिट आती है कि फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से, व्हेन वी further increase the temperature, our enzyme denatures. So here enzyme denatures means it lost its shape. There is no shape. So if the enzyme lose his globular shape, he cannot react further. He cannot conduct the reaction. Okay. So here in the start, when the temperature is increasing, enzyme activity is increasing, but at a certain limit, 37 degree centigrade. 37 degree centigrade is optimum temperature. The reaction rate is maximum here. Reaction rate is maximum at 37 optimum temperature of the enzyme of human body. ठीक है. And further, if you increase the temperature, ये सोचते हुए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे और रिएक्शन बढ़ जाएगा, नहीं. 37 से आगे जाएंगे तो फिर जो है सो मॉडरेशन इज बेस्ट पॉलिसी. इस्लाम में भी ये है कि म्याना रवैया इख्तियार करें. तो मॉडरेशन यहाँ पे भी, एंजाइम में भी मॉडरेशन है कि एक सर्टेन लिमिट में रहते हुए जब आप काम करते हैं तो बेस्ट आउटपुट आता है. उससे अफराद व तफरीक, इफ देयर इज लेस टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज. इफ देयर इज वेरी हाई टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज. बट इफ the temperature is in the middle value, middle range, the enzyme activity is maximum. Similarly, different animals have different enzymes with different optimum temperature. Different animals या plants के अंदर जो enzyme होते हैं वो different body temperature पे work करते हैं. जैसे fishes have those enzymes that work on high temperature. Why? Because their body temperature is greater than 37. Our body temperature is 37, human body temperature is 37, but fish's body temperature is not 37, it is higher. So their enzyme will work on higher temperature as their optimum temperature value. Okay, so two terms we discussed. One, optimum temperature on which the enzyme work best, and the second is denaturation. That is when there is increase in temperature, the enzyme get denatured and enzyme cannot work further. Enzyme जब denature हो जाता है, अपनी shape lost कर देता है, तो further वो work नहीं कर सकता. So today homework is long question, page number 109. 109 पे ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर यूजेस ऑफ एंजाइम. तो आपने यूजेस ऑफ एंजाइम को हेडिंग्स बना के सेंड करना है. अल्लाह हाफिज.